very good afternoon to all of you. Welcome back to another video. It is my great pleasure to be with all of you once again. Right at the very outset, thank you so much for your support and for your kindness. I am hoping that I could continue this journey. So let's start our video. So in this video, I am going to narrate a story. Simply, I will ask ChatGPT to give me a story, a short Hindi story, and I will try to translate in English. And after that, I will ask ChatGPT to correct my mistakes and give me some alternative sentences. Okay, so let's start. This is my practice for 2 days. Okay, let's start. First of all, I will ask ChatGPT to give me a Hindi short story. Okay, so let's start. Please give me a short Hindi story. Then I will translate it in English. Then you correct my mistakes. So okay, ChatGPT give me a short story, a very short story, and now I will write down and I will translate it in simple English. Then I will show you, and I will tell what is this story. So let's start. First I translate it. Okay, I will translate it in my I will translate in ChatGPT. Okay, so let's start. After translations, I will tell you what is story. Okay, in Hindi or English as well. So let's start. Okay, now I have done it. I have translated it in my own language. Now let's see how many mistakes I made and how ChatGPT give me the right version and correct my mistake. So first of all, I will tell you the story in Hindi. Okay, so listen carefully. You can also try to translate it in your own language. Then you will see how many mistakes you are making, or then you can ask ChatGPT to correct your mistake. So first of all, listen story. The story is, एक लड़की रोज
इंग्लिश सीखने की कोशिश करती थी। वह हर दिन कुछ नए शब्द सीखती और उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करती थी। शुरुआत में उसे इंग्लिश बोलने में बहुत झिझक होती थी और वह कई गलतियां करती थी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं गलतियां करने से डरती रहूंगी तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। उस दिन से उसने बिना डरे इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है, छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। सो लेट्स सी। नाउ यू कैन listen what I have written or what I have translated. So my translation is, a girl tried to learn English daily. She learned new words every day and tried to speak them. In the beginning, she faced difficulty to speak English and she made a lot of mistakes. One day, she thought, if I keep scared of making mistake, I will never learn. From that day, she started speaking English without afraid. Slowly, her confidence will increase. Moral: small efforts change in big results one day. So this is my translation, but I know I make some mistake. Let's see what is the corrected version of ChatGPT. Now I will read corrected version of ChatGPT. Okay, so एंड साथ साथ में मैं बताती जाऊंगी कि मैंने क्या लिखा और करेक्टेड वर्जन क्या है। सबसे फर्स्ट लाइन थी कि एक लड़की रोज़ इंग्लिश सीखने की कोशिश करती थी। मैंने लिखा, अ गर्ल ट्राइड टू लर्न इंग्लिश डेली। और चैट जीपीटी ने भी सेम लिखा है, अ गर्ल ट्राइड टू लर्न इंग्लिश एवरी डे। लगभग सेम है। दूसरी लाइन थी, वह हर दिन कुछ नए शब्द सीखती और उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करती थी। मैंने लिखा, शी लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे एंड ट्राई टू स्पीक देम। और सही वर्जन है इसका, शी लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे एंड ट्राई टू स्पीक देम। ये भी मेरा ठीक था। नेक्स्ट लाइन थी, शुरुआत में उसे इंग्लिश बोलने में बहुत झिझक होती थी और वह कई गलतियां करती थी। तो मैंने लिखा था, इन द बिगनिंग शी फेस्ड डिफिकल्टी टू स्पीक इंग्लिश एंड शी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक। और चैट जीपीटी ने मुझे दिया है, वन डे शी थॉट, नो, इन द बिगनिंग शी हैड डिफिकल्टी स्पीकिंग इंग्लिश एंड मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ओके, मैंने लिखा था she faced difficulty, but the right version is she had difficulty speaking English. आगे का सही है, made a lot of mistake. नेक्स्ट लाइन थी, एक दिन उसने सोचा, अगर मैं गलतियां करने से डरती रहूंगी तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। मैंने लिखा, one day she thought, if I keep scared of making mistakes, I will never learn them. One day she thought, if I keep being afraid of making mistake, I will never learn. सही होगा, if I keep being afraid of making mistake. If I keep being afraid of making mistakes, I will never learn. ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती की। नेक्स्ट था, उस दिन से उसने बिना डरे इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। From that day, she started speaking English without afraid. ये मेरा वाला था। From that day on, इसके साथ on लगेगा, उस दिन से, from that day on, she started speaking English without being afraid. मैंने सिर्फ being नहीं लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा confusion होती है being वाले sentences में। So बाकी सही है, she started speaking English without being afraid. धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। Slowly her confidence will increase. ये मैंने लिखा, slowly her confidence increased. Her confidence increased. ओके, मैंने will का यूज़ किया लेकिन इसमें V2 आएगा, सिंपली पास्ट की स्टोरी है इसलिए। मोरल मैंने लिखा था, छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। स्मॉल एफर्ट्स चेंज इन बिग रिजल्ट्स वन डे। स्मॉल एफर्ट्स कैन लीड टू बिग रिजल्ट्स वन डे। कैन लीड, ओके,
Small efforts can lead to big results one day. So this was my today's practice, and I tried to translate a short story in my own language. I made some mistake, but I learned from those mistakes, and I will make sure I will not make any mistake in future. And in the same way, you can also do your English practice like this. You can just ask ChatGPT to give a short story, not long one, because when you ask to give a long story, you may be confused to translate it. So rather than you just ask to give a simple and short story, and then you try to translate in your own language. Okay, and then again you ask ChatGPT to correct your mistake, and then you will try to learn from those mistakes and make sure you will not make those mistakes again. So this is for my today's videos. I hope this video helped you to start your journey, and I am hoping that I could continue this journey. And one more thing that I want to say, I have completed around 240 subscriber, and please, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe to my channel. And if I could complete 1000 subscriber, I would be extremely happy. So please do subscribe my channel and like this video. See you in the next video.